वॉशरूम वाले भैया आ गए। ये दरवाजा तोड़ दिया ना, तोड़ दिया। आईसीएसएल पहले कहते थे हम लोग को कैसे भागते आए थे। हाँ हम लोग देखते थे, हम लोग तो वॉशरूम पकड़ते। वॉशरूम पकड़ते। आईसीएसएल वाले ने तोड़ दिया, सीधा बोल दिया। हमें नहीं पता। हम लोग तो वहाँ पर गए ही नहीं। कैमरा भी रिकॉर्ड हो गया आईसीएसएल। आर्या को धक्का भी दिया। आर्या की छोटी उंगली बोला झूठ पकड़ना है। झूठ पकड़ना नहीं है, पकड़ने झूठ है। कुछ और बहुत कुछ ना। आर्या बेबी कुछ लिखना है, क्या बनना है? आज तो बात तो क्यों हो रहा है? अरे कंप्लीट करना है। अभी कब कर रही थी ना, तो छुट्टी थी।
ये मत कांदा है वो भी हम लोग के सिलेबस कंप्लीट किया हमारा सिलेबस कंप्लीट हमको लगा डिलीट है सब व्हाई डू फॉलो इन दिया नहीं आता ना शायद हर इकोनॉमिक्स का भी एक चैप्टर होता है बच्चा कौन सा इकोनॉमिक्स कौन पढ़ता है हम लोग पढ़ते हैं मेरे मार्क्स गए थे वो सर मस्त है ये सर ना हां देखो वापस बैठना उस दिन ये दोनों बैठे हम दोनों बैठे थे ये वैसे साढ़े हम लोग का क्या 5:30 बजे खत्म 5:30 खत्म होता है 7:30 तक बैठ गए एसएसटी के लिए मजा है सर हॉटस्पॉट है नहीं मेरा नेट मेरा खत्म हो गया है वो इतना नॉइज क्यों आ रहा है आज इतना अच्छा दिख रहा है मुझे हां हॉटस्पॉट और सब कुछ इसको देखो, बिना गाड़ी का अच्छा दिखता है देखो क्या है पहले हो गया थी बहुत ज्यादा जल्दी हो गया तो शेप करेगा एक फिर एग्जाम बर्थडे में शेयर करना कितना बात करता है बर्थडे में इधर साइड से काट यही बीच का ज्यादा बर्थडे में क्या ऐसे नोच भी उड़ा दो बाल छोटे ये मस्त लग नहीं बाल बढ़ने दे इसका कुछ ये तो बढ़ेगी ये वाला मेरे बाल बढ़ेंगे एक दिन मतलब ऑयल कोई कुछ तो आता है ना भाई मैं फेस वॉश सब लगाता हूँ शैम्पू वो आदमी कंडीशनर नहीं है ना बट शैम्पू से कुछ नहीं होता ऑयल आता है कोई बड़ा कोई लगा शैम्पू क्या लगाएगा तुमसे है आरुष के उसके हफ्ते में एक बार तू कितना शैम्पू करते हैं बालों को और हाँ कितना शैम्पू करते हैं बालों हफ्ते में एक बार कभी कभी भूल जाता तो 3 हफ्ते गया पक गया हाय मां मेरा हाय मैं पीछे जाने तो सामने आ जा सामने है मेरा फोन वो ऑप्शन है तुम्हारे पास ये पानी नहीं बता एक सेकंड बता तुम अपना पानी क्यों नहीं लेके आते हो मैं भूल ही गया हर दिन तो उससे वहां पे पीते now next is we continue with this tissue specific manifestation unlike a word manifestation मतलब क्या manifestation मतलब every particular disease now that I talk about malaria now for malaria which part of the body is affected huh? malaria which part of the body is affected are you aware malaria में नहीं नहीं blood and the liver ये the blood and the liver the blood cells and the liver red cells red blood cells if I talk about AIDS now white blood cells if I talk about hepatitis which part of the body hepatitis hepatitis again started no inside joke I'm not interested in your joke at all मैं इसलिए तो उसको बोल रहा था मैं और तुम लोग का जो ये हंसी ना बहुत इरिटेटिंग है करते जो हंसते हो हंसी भी तो स्मार्ट होनी चाहिए the way you smart laugh the way you walk the way you talk सब कुछ हमें जो भगवान ने हंसी दिया है no नहीं सही में भगवान ने हंसी किया भगवान ने बोला ही नहीं कि तुम ऐसे स्टूपिड के जैसे हंसो ऐसे बोले भगवान बोलते हंसने का नहीं ऐसे बोलते ऐसे हां हां what is it हम स्माइल करेंगे तो बहुत अच्छी हो क्या देख हां गुड लक तो तुम लोग जो भी बोलते हो उसको बस हंसना ही होता हम क्योंकि उसको जोक पता रहता है सब वो जोक सुनने के लिए स्कूल जाता है मेरे को आता है भी स्कूल आता एक जोक सुनने के लिए और एक दूसरा रीजन उसके लिए स्कूल आता हाँ मेरे को भी पता है तुम लोग को बकवास जोक करने के लिए जाते हो नहीं हम बास्केटबॉल खेलने के लिए जाते हैं पढ़ने के लिए तो कोई भी नहीं जाते उसको मैं जाता हूँ पढ़ने के लिए कितने लेक्चर बैठता है तू क्लास में 7 में से 7 झूठा 7 में से 7 ही बैठता हूँ 7 में से 7 मतलब स्कूल है ना तुम्हारा हाँ ऑप्शन है 7 बैठोगे 4 साल में से 2 लेक्चर बैठता है 2 लेक्चर बैठता ही नहीं है बैठता ही नहीं है मैं भी पूरा बैठता हूं आई एम सो सरप्राइज्ड इस स्कूल में कैसे ऐसा ऑप्शन कुछ है 4 तो ऑप्शन नहीं बंद मार ऑप्शन नहीं है बंक मार स्कूल में कैसे बंक मारो
ये दोनों पूछो। ये दोनों क्या चल मैं नहीं, मेरे को बैठना पड़ता है क्लास में। कोई बंक नहीं मारता तू बैठता है पर पढ़ाई करता है। पीछे बैठता तो कम से कम। आज लेक्चर बंक मार ड्राइंग लास्ट में पार्ट कंप्यूटर और सब बंक। Better not talk about this. Now, manifestation मतलब मैं मैनिफेस्ट करने में सोच रहा या नहीं, मैनिफेस्ट करना लाइक ये किसी के बारे में बुरी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो, नहीं। अच्छी चीजें मैनिफेस्ट। आर्या प्लीज मैनिफेस्ट करना मतलब हम लोगों को कोई टारगेट है वो सेट किया है तो मैनिफेस्ट कर उसके लिए कोई प्रोसेस होता है तो मैनिफेस्ट कर करके वो टारगेट मैनिफेस्टेशन मतलब एस्टैब्लिश होना, हां एस्टैब्लिश करना। मैनिफेस्टेशन कोई लॉ है उसको मैनिफेस्ट करना है, मतलब उसको एस्टैब्लिश करके उसको इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा मैं बराबर हूं लगा। Now, when we talk about manifestation with reference to disease, मतलब एक particular organism body के अंदर जाके, just now I was giving you example, अगर मलेरिया है, this organism will look for the blood cells and the liver. अगर virus responsible for the influenza, अगर influenza वाला virus body के अंदर जाता है, will it look for the liver? It will look for the nasal parts, the cells of the nostrils, the cells of the throat, क्योंकि ये सारे parts को affect करना है। मतलब I talk about any type of an organism, every type of an organism can develop in certain regions of our body. I talk about the virus responsible for cholera. It can settle down only in the intestinal cells. I talk about the hepatitis bacteria. It can settle down only in the liver cells. The protozoa for malaria only in the liver and the blood. It is like that. So now that we were talking about the COVID, the virus, which part of the body was it affecting? The lungs. Lungs was the major part of the body that was getting affected. So did we ever hear about any case where the COVID virus was affecting the stomach and the intestine? No. Lungs. So for any type of an organism you talk about, it has a specific region of our body जहाँ पे वो सबसे अच्छा develop हो सकता है. That is what is called manifestation. हर part of the body में अलग temperature conditions होते हैं. Heart में temperature is नहीं हर part. हर एक part of the body में different type of enzyme secretion, not temperature. Temperature is more or less the same. It is only because of the different type of enzymes and secretions जिसकी वजह से different type of organisms find them suitable. Now we talk about some common manifestations and specific manifestation. Manifestation मतलब organism हमारे body में establish करके क्या symptom develop करता है. Now let us learn two ways. Common manifestation है. I talk about 3 diseases. एक है pneumonia. Another one is malaria. Parts of the body, 2 different parts affected, no? Sorry. Now, I talk about 3 diseases here. कौन सा वाला बोला मैंने? Malaria, pneumonia, tuberculosis, चलो. एक और बता. अच्छा, jaundice. I talk about jaundice. तो यहाँ पे 3 different type of diseases, absolutely 3 different types. तो मलेरिया में I said which parts of the body? RBC है and liver. Okay. Tuberculosis में lungs. Okay. अच्छा चलो I'll not write jaundice. I'll write chicken pox. तो chicken pox में which part of the body? skin 3 different absolute parts of the body. अभी manifestation we are going to come across. Common manifestation क्या है? Common symptom क्या है इसमें? ये तीनों डिजीज में कॉमन सिम्टम क्या है? कॉमन सिम्टम क्या है? फीवर इज अ कॉमन सिम्टम. ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया, चिकन पॉक्स. अच्छा मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस पर से कफ कॉमन सिम्टम. हाँ वीकनेस है. चलो वीकनेस है. अभी स्पेसिफिक सिम्टम बताओ. स्पेसिफिक सिम्टम क्या है? इसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. अब स्पेसिफिक सिम्टम अगर मलेरिया का है, इसमें होता है शिवरिंग एंड चिल्स. मतलब मलेरिया में सबसे ज्यादा सिम्टम्स जो स्पेसिफिक सिम्टम होती है, जो बाकी सारे फीवर से समझ में आता है कि ये मलेरिया है, बॉडी शिवर करता है एंड suddenly it will start sweating
and suddenly high fever, जिसको chills बोलते हैं। chills अचानक से बॉडी पूरा स्वेट होने लग जाता है, अचानक से फिर से हाई फीवर, फ्लक्चुएटिंग फीवर होता है। क्या ये ट्यूबरकुलोसिस में भी ऐसा होता है? नो। ट्यूबरकुलोसिस में ब्रेथलेसनेस, ट्यूबरकुलोसिस में कफ के साथ ब्रेथलेसनेस होगा, बट ट्यूबरकुलोसिस का जो फीवर है दैट इज डिफरेंट फीवर, ग्रेजुअल एक ही तरह का फीवर रहता है, फ्लक्चुएट नहीं होता। What about chicken pox? Specific क्या है? चिकन पॉक्स स्किन पे ही आता है। Blisters, water filled blisters होना। So ये मैंने क्या बोला? These are ना blisters क्या होता है? blisters मतलब पानी भर जाता है, जो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, क्या बोलते हैं? फोड़े बोलते हैं ना? पस पस नहीं, water it's not what pus, ब्लड भी होता है। blood नहीं होता, it's only water retention type। water retention मतलब a part of the body getting swollen, that is water retention। चिकन पॉक्स में क्या होता है? सारे बॉडी में छोटे 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 ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, उसमें पानी रहता है, उसके अंदर पानी भर जाता है, and that water will dry up in 2 weeks time, then the skin will fall off, so in almost about 4 weeks time the person is recovering back, almost 4 weeks लगता है। automatically recover। It's a viral infection, automatically body will recover, but that's the reason टाइम बहुत लगता है। चिकन पॉक्स स्प्रेड होता है, ऑफ कोर्स हाँ, बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है ये। तो अभी देखो ये जो 3 सिम्टम्स मैंने लिखा है ये तीनों के लिए कॉमन है, तीनों डिजीज के लिए these are the common symptoms, बट ये वाले जो सिम्टम्स है शिवरिंग, क्या ये 2 डिजीज में शिवरिंग होता है? नो। ब्रेथलेसनेस, ये 2 डिजीज में ब्रेथलेसनेस नहीं होता, और ब्लिस्टर्स, ये 2 डिजीज में ब्लिस्टर्स कभी नहीं होता है। तो ना दिस इज नोन एज कॉमन मैनिफेस्टेशन, और इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो अभी नाउ दैट अ पर्सन गोस टू द डॉक्टर विद फीवर, a person goes to the doctor with very high fever, does the doctor immediately give medicines for malaria or tuberculosis? No. Or no, first of all the doctor will give some paracetamol, calm down the fever, and maybe parallelly some blood tests। तो blood test में से समझ में आएगा कि क्या हुआ, what are the pathogens present in the blood। तो वो पैथोजन समझ के the doctor will now start the treatment either for this or for this or for this। but अगर fever देखे ना, say suppose a person goes to the doctor with fever and pain in the stomach and some 2-3 symptoms like headache है, fever है, loose motion है, then the doctor may immediately give some medicines for cholera or dysentery, diarrhea, क्योंकि symptoms सब उस तरह से इंडिकेट कर रहा है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, फीवर है एंड स्टमक पेन है। these are commonly all symptoms of cholera या तो डायरिया। सो ट्रीटमेंट 2 तरह के हो सकते हैं। व्हाट आर द 2 टाइप्स? या तो सिम्टम देख के ट्रीटमेंट होता है बेसिकली, जब पेशेंट इज एबल टू शो एटलीस्ट 5-6 सिम्टम्स जो एक कॉमन डिजीज को पॉइंट करता हो, एंड द डॉक्टर गिव सम मेडिसिन, उसको बोलेंगे सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, उसको बोलते हैं सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। बट कभी कभार सिम्टम देख के समझ में नहीं आ सकता, इफ द पर्सन इज नॉट शोइंग टू मेनी सिम्टम्स, सिर्फ खाली फीवर और हेडेक है, सो फीवर और हेडेक तो यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, then the doctor is not very sure कि फीवर और हेडेक किस लिए है, then what will the doctor give? Blood test or some other tests, उसको बोलते हैं पैथोजन डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, उसको बोलेंगे पैथोजन डायरेक्टेड उसको बोलेंगे पैथोजन डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटी लाइक कोई वायरस खाया है एंटीबायोटिक्स? कब खाया? क्यों खाया? कोरोना नहीं भी मतलब हम डेड चीज से हम लोग जो करते हैं वो एंटीबॉडीज अपने इसमें ये होता है, स्टॉप द प्लांट होता है, देन वो वायरस की वजह से जो वायरस है उसका जो डेड सेल होता है ना, उसको हम लोग दूसरे के इसमें डालते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, मतलब
ट्रीटमेंट तो नहीं, मतलब वैक्सीन डाल दी। तो वो तो हो गया वैक्सीन का वैक्सीन। तो उसमें भी एंटीबॉडीज रहते हैं। एंड मैम अभी हमें कोई पर्टिकुलर डिजीज हुई है, हाँ, तो हमारी बॉडी खुद से उसको फाइट करने के लिए जो ये बनाती वो तो हो गया वैक्सीन का कॉन्सेप्ट। एंटीबायोटिक क्या होता है? यहाँ से बैक्टीरिया आता है तो वो उसको एक स्टेरॉइड से बचाते हैं। हाँ, एंटीबायोटिक्स। तो वो जो एंटीबायोटिक्स हम एक्चुअली लेते हैं उसमें क्या होता है एक्चुअली? नहीं, वो तो फिर से वैक्सीन हो गया। सो नाउ दैट वी टॉक अबाउट एंटीबायोटिक्स, till this age of your life you must have taken so many antibiotics. तो एंटीबायोटिक्स क्यों लिया था, कब लिया था? जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था। वायरल इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक नहीं लेते, या लेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ दैट आई एम हैविंग कोल्ड, मैं अगर एंटीबायोटिक लेती हूँ देन आल्सो मुझे वो 2-3 दिन लगेगा ठीक होने के लिए। इवन इफ आई टेक और आई डोंट टेक, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। But if a person would have had some bacterial infection, तो एंटीबायोटिक लेते हैं ना। से सपोज थ्रोट पेन इज अ थ्रोट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक लेते हैं, साथ पे नेक्स्ट डे द पर्सन इज फीलिंग मच बेटर। क्यों? एंटीबायोटिक ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है, नॉट फॉर वायरल इन्फेक्शन। क्या है एंटीबायोटिक? लेट अस सी व्हाट इज एन एंटीबायोटिक। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, दिस इज अ पार्टिकुलर सेल, ये एक सेल है, दिस इज अ न्यूक्लियस, डीएनए है, and these are some germs which have entered the body. These are some germs which have entered the body. These are some germs. Now I'm talking about these germs. क्या है? These are some bacteria. This is some bacteria that have entered the body. So अभी this person now takes antibiotics. This person takes antibiotics. The moment antibiotics enter the cell, ये जो डिवीजन हो रहा था, now the bacteria was very happily, they were multiplying, now the bacteria is all killed. Bacteria is not able to multiply any further. क्यों? ये जो एंटीबायोटिक है, these are also some extracts of bacteria or fungi. Extracts of bacteria or fungi. तो now when I talk about सबसे जो पहले एंटीबायोटिक जो बना था उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बना था many years back in the 18th century almost। तो ये जो पेनिसिलिन एक फेमस बायोलॉजिस्ट ने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था ये पेनिसिलिन फ्रॉम अ फंगस। तो and then he found that ये जो केमिकल कंपोनेंट है, जब कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या सेल, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, एंड दिस पेनिसिलिन इज गिवन, द पर्सन बिकम्स ओके, द पर्सन इज गेटिंग रिड फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये काफी साल तक चला, बट इसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी हो रहे थे। People used to suffer from headache and vomiting and etc. बहुत सारे। So now in the market, so many other different type of antibiotics started coming in. आजकल जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, लेते हैं for any type of a bacterial infection, you go to the doctor for any type of an infection, skin infection, stomach infection, throat infection, immediately 5 दिन का एंटीबायोटिक, 7 दिन का एंटीबायोटिक etc. तो क्या हम जो आजकल जो एंटीबायोटिक लेते हैं, are these extracts of bacteria and fungi? No. Today the antibiotic that we take, these are simple chemicals, chemical X Y Z को मिलाओ and then कोई एंटीबायोटिक बन गया। And this antibiotic, the moment it enters our body cells, जो बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म में ग्रो कर रहा होता है, they start getting died out। क्योंकि ये जो केमिकल है, this chemical does not allow the cell wall formation of the bacteria। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है क्या? होता है। तो ये जो एंटीबायोटिक है, what does it do? Antibiotic does not allow the cell wall formation, तो obviously कोई नया बैक्टीरिया तो बन ही नहीं सकेगा। The moment we start consuming the bacteria, the antibiotic,
हमारे बॉडी सेल्स में जहां पे भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, न्यू बैक्टीरिया बनना बंद हो जाता है, क्योंकि ये सेल वॉल को बनने ही नहीं देता है। एंटीबायोटिक, आई रिपीट अगेन, unless and until it is a bacterial infection, एंटीबायोटिक काम करेगा? एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन के लिए काम करता है? नेवर। अगर एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन के लिए काम करता, देन तुम लोगों को ये 2 साल का आराम मिलता ही नहीं था। 2 साल का ऑनलाइन मिलता ही नहीं था, तो 2 महीने में एंटीबायोटिक कोई ना कोई निकल जाता। So why did this doctors and the biologists, they took almost 1.5 years to make vaccines? क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन था, कोविड वाज अ वायरल इन्फेक्शन, उसके तो कोई एंटीबायोटिक नहीं बना सकते, बट एंटीबायोटिक इफेक्टिव ही नहीं होगा फॉर एनी वायरल इन्फेक्शन। So that's the reason, always understand what is an antibiotic. Antibiotic actually, बट वैक्सीन और एंटीबायोटिक सेम ही है, मतलब जो I will explain. पेनिसिलिन जो था। नहीं, I will explain. पहले ये समझ में आया what is a antibiotic? पहले जो एंटीबायोटिक बनते थे, पहले जो एंटीबायोटिक बनते थे, they were secretion from the bacteria or some fungi. आजकल ये करना डिफिकल्ट है, बिकॉज ये लेबोरेटरी में ये प्रोसेस होते एंड population is the population demand from the population is so much. तो इस तरह से मेडिसिन बनाने लगे तो साल लग जाएगा थोड़ा सा एंटीबायोटिक बनाने के लिए, ये नहीं आजकल पॉसिबल नहीं है। Many years back it was possible, but today with the increasing demand, ये particular process अभी धीरे-धीरे बहुत कम हो गया है, but still today we talk about some generic medicines and etc. जो big brand medicines हैं, still they are this, but majority of the common antibiotics जो हम खाते हैं, these are actually chemicals. But anyways, what are antibiotics doing? Number one, preventing or treating bacterial infection. अब जो ये एंटीबायोटिक हम लेते हैं, कब लेना चाहिए? थ्रोट इन्फेक्शन नहीं हुआ, हम 6 महीने पहले एंटीबायोटिक लेके रख सकते हैं? होने के बाद जब हुआ है तब लेना है, जब हुआ है तब लेना है। तो ये अगर एंटीबायोटिक है तो वैक्सीन क्या है? Then what is vaccine? Vaccine is this is a body. Now we are taking a vaccine. अब वैक्सीन क्या है? Vaccine is the suspension of dead germs. It is a suspension of dead germs. ये dead germs को हमने लिया, ये बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर जाते ही the WBCs will start producing certain chemical substances known as antibodies. ये antibodies कहाँ पे रहेगा? Stored in the blood plasma. Plasma is a liquid part of the blood. ये blood plasma में रहता है for years. अब now ये antibodies already है हमारे blood plasma में. Say suppose now I talk about the live germ has entered. The live germ of what? We'll talk about chickenpox or talk about COVID. Live germ has entered. Is this person going to suffer? No. नहीं, because antibodies already इसके प्लाज्मा में है। तो ये एंटीबॉडी क्या कर रहा है? These antibodies are able to kill this virus straight away. तो ये वायरस को बॉडी के अंदर एस्टैब्लिश होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, immediately they are killed. तो वैक्सीन अगर हम नहीं लेंगे, हमें इम्यूनिटी और किस तरह से मिल सकती है? एंटीबॉडीज नहीं, हमने वैक्सीन ले लिया तो हमारे बॉडी में अभी एंटीबॉडीज पहले से ही है। तो क्या वैक्सीन कब लेना है? जब हमको इन्फेक्शन हो रहा है तब लेना है कि 6 महीने 1 साल पहले? पहले से लेके रख सकते हैं, प्रिकॉशन है, प्रिवेंशन है। तो हमको वैक्सीन नहीं लेना है, बट स्टिल वी वांट इम्यूनिटी। तो कैसे होगा? सफरिंग, एक बार सफर करके भी हम इम्यून हो सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। जिसको चिकन पॉक्स एक बार हो गया, वो अगर वैक्सीन नहीं भी लेगा, हाँ, कोविड जिसको एक बार हो गया तो सेकेंड टाइम बाय चांस अगर होगा भी तो बहुत माइल्ड होता है, कम हो जाता है। क्यों ऐसा? बिकॉज एक बार जब हो गया, ये एंटीबॉडीज तो बॉडी में बन गया है,
तो सेकंड टाइम जब लाइव जब एंटर होगा सिम्टम्स बहुत कम होंगे, या तो बॉडी अगर स्ट्रांग है तो होगा भी। हम वो डिटेक्ट कर लेते हैं ना। These WBCs are very smart cells. These WBCs can understand that some new cells are coming. इसको foreign cells बोलते हैं in the language of biology. Foreign cells आ रहा है तो इसको मारना है। तो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट क्या है? वही सेल्स अंदर जा रहा है, WBC फटाफट पहचान सकता है कि न्यू सेल्स आर एंटरिंग, उसको मारना है। बट WBC को ये नहीं समझ में आता कि लाइव है कि डेड है। तो ये डेड सेल जाता है, then also the WBC is ready to fight with the cells. डेड सेल को कैसे मारता है? हाँ, तो सेल्स तो डेड है, these are dead. It is in a suspension. एक ड्रॉप ऑफ वैक्सीन में अगर देखा जाए hundreds of these germs are there. हमने जो वैक्सीन लिया था, in 1 ml of the vaccine there are hundreds of this COVID virus. तो ये जो ऑर्गेनिज्म अंदर गया, WBC हमारे बॉडी के WBCs को ये नहीं समझ में आया कि लाइव है कि डेड है, बट उसको खाली ये समझ में आया कि एक्स्ट्रा सेल्स हैव एंटर्ड, इसको मारना है। तो फिर उसको मारने जाता है तो होता क्या है? होता यही है कि इन दैट प्रोसेस एंटीबॉडी से ही तो वो मार रहा है। वेपन क्या है WBC का? वेपन एंटीबॉडीज है। सो ऑल दिस WBCs इन आवर बॉडी दे आर रिलीजिंग एंटीबॉडीज। हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज भर जाता है, एंड अब तो ये डेड है, बट बाय चांस अगर आगे 6 महीने के अंदर लाइव जर्म एंटर भी होता है, सो एंटीबॉडीज ऑलरेडी है रेडी हमारे ब्लड में, सो वी विल नॉट सफर फ्रॉम द सिम्पटम एट ऑल। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। तो जो डेड जर्म जो जा रहा है कोविड का, वो मतलब कुछ भी हो गया तो बस एंटीबॉडीज काम करता है ना, एंटीबॉडीज से मतलब इट इज समथिंग लाइक, ये WBCs को मेडिकल साइंस में इसको ये बोलते हैं कि ये जो डेड जर्म्स को अंदर बॉडी में डालते हैं, ये WBCs को टू फूल द WBCs। हाँ, WBCs को क्योंकि ये नहीं समझ में आता डेड है कि लाइव है, जैसे ही न्यू सेल्स आया WBC स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू किल देम। तो हमको एंटीबॉडीज मिल जाता है बॉडी के अंदर, हमने ले लिया वैक्सीन, एंटीबॉडीज बन गया, बट डिड वी सफर फ्रॉम एनी सिम्पटम? नहीं, कोई सिम्पटम तो हुआ नहीं। मतलब वो लाइफ से ज्यादा अच्छा डेड डालेंगे तो हाँ, तो लाइव अगर हमको लाइव डालना है तो हमको तो सिम्पटम 1 महीना 2 महीना 3 महीना सिम्पटम्स झेलना पड़ेगा। देन एंटीबॉडीज दोनों जगह। दिस इज अ स्मार्टर मेथड। इसमें हमको एंटीबॉडीज भी मिल रहा है एंड वी आर नॉट सफरिंग आल्सो। इसमें तो हमको सफरिंग हो रहा है ना, सिम्पटम्स हो रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड एंटीबायोटिक्स। Vaccination and antibiotics. What is the meaning of prophylaxis? Underline that word. Prophylaxis मतलब prophylaxis किसे कहते हैं? Prevention. If I have to understand, can you tell me prophylactic या prophylaxis? Now, if I ask you, what are mention one? If I ask you, mention one prophylactic measure for jaundice, क्या लिखोगे? और cholera, चलो cholera common. Mention one prophylactic measure of cholera. क्या लिखना है? Prophylactic मतलब prevention. हाँ, मतलब दूर रहेंगे। हाँ, cholera मतलब uncontaminated water, uncovered food नहीं खाएंगे। अच्छा, prophylactic measure for malaria क्या लेंगे? Don't go near हाँ, avoid the breeding places, मॉस्किटो को ब्रीड नहीं होने देना है, वाटर स्टैग्नेशन नहीं होने देना है, घर के अंदर रेपेलेंट्स यूज करना है, मॉस्किटो नेट्स इफ प्रेफरेबल यूज करना है, all these are the preventive measures. So that is what is known as preventive measures. So already we have been talking about a difference between vaccination. Now let us write down one question. First you write down this, then I will ask you some text questions to do. Write two differences between antibiotics. Two differences between antibiotics and vaccine. Two differences between antibiotics and vaccine. Two differences between antibiotics and vaccine. कॉलम बनाओ, एंटीबायोटिक के अंदर लिखो
antibiotics and vaccine. Under that you write, under antibiotics, these are extracts of bacteria or fungi or synthetic chemicals, Extracts of bacteria bacteria or fungi or synthetic chemicals. Synthetic chemicals actually हम लोग जो आजकल लेते हैं, that is all synthetic chemicals. Or synthetic chemicals taken or consumed during an infection. Synthetic chemicals consumed during an infection. During an infection. Other side. This chemical taken off. Consumed. Taken लिखा तो consumed मत लिखो. Taken during an infection. Other side. Vaccine. Suspension of dead germs. Suspension of dead germs. Suspension of dead germs. Taken before any infection. Before any infection. Next you write antibiotics. Under antibiotics you write can cure bacterial infections. Can cure bacterial infections. By not allowing cell wall formation of bacterial cells. By not allowing cell wall formation of bacterial cells. Vaccines. Effective or can treat both bacterial and viral infections. Effective या तो can treat both bacterial and viral infections. For bacterial and viral infections. For bacterial and viral infections. Comma, in which WBC produces antibodies. WBC produces antibodies. Okay, so major two differences between vaccination and antibiotics you are supposed to remember. Now look into these questions that you have in your notebook. This solved questions जो है ये तो तुमको पढ़ना ही है. Apart from that, let us try to solve some few questions only. This must be the chapter. The chapter is small. It's a small chapter. Now look into this. Number one करो. Number one. Keep solving. फटाफट I am showing you the answer. Question. किसी का बुक नहीं चाहिए. You don't have to wait for anybody's book. फटाफट I am telling you the question. Keep solving. Number one करो. Write the question, write the answer. I will at least try to solve at least some. Actually, it's not visible. बुक से देख लेना. Visible नहीं है. How come? मेरी बुक नीरज के पास. Again started. मैं वहाँ पर ही है. Started again. Naming the. आरुष से ले ले. आरुष के पास भी है. I mean, it's from perfect.
थोड़ा लेफ्ट में स्लाइड और थोड़ा राइट में तेरे पास तो है ना बुक चलो करो फर्स्ट वाला नंबर 1 करो आप बोलोगे खुद से करो खुद से करोगे हाँ चलेगा करो डाउट है तो पूछो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द आंसर इज देन राइट नेम द वेक्टर याद है आंसर क्या बोला था क्या है वेक्टर वही फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो भी हुआ ना बट वो नहीं नाम लिखना है मॉस्किटो का तो थोड़ी टाइप्स हाँ तो मतलब मॉस्किटो के अंदर ही आता है ना हाँ फीमेल एनोफिलिस female anopheles mosquito vector and causative organism क्या हुआ plasmodium that's a protozoa plasmodium क्वेश्चन ये लिखा तो चलेगा नहीं बाद में आएगा समझ में कौन सा आंसर लिखा है पेज नंबर लिखो क्वेश्चन नंबर लिखो तो नंबर 6 and 7 करो सेकंड ही करना नहीं 6 बाकी तुम you can try all I'm telling you only the most important ones 6 and 7 6 and 7 क्रोनिक स्प्रेड हाँ नहीं एग्जांपल्स लिखना है यहाँ पे खाली एग्जांपल्स लिखना है क्रॉनिक स्प्रेड नहीं होता डायबिटीज एक्यूट स्प्रेड एक्यूट बेसिकली स्प्रेड डायबिटीज कैंसर हाँ डायबिटीज एंड कैंसर क्रॉनिक है एग्जांपल लिखो दो एग्जांपल फटाफट 6 7 हाँ डायबिटीज भी आ रहा है तो जॉइंट्स वाला है ना हाँ वो क्रॉनिक है ना क्रॉनिक है क्रॉनिक एक्यूट क्या लिखोगे एग्जांपल फ्लू है निमोनिया है ट्यूबरकुलोसिस है चिकन पॉक्स है these are all acute दूसरा क्या होता है done 6 and 7 number 12 प्रोटोजोआ एक तो हो गया मलेरिया नहीं वो तो फंगस है वो कौन से तो राउंड शेप बॉम्ब्स होता है वो क्या होता है वो तो फंगस है देखो वो टेबल है बुक में प्रोटोजोआ मलेरिया है कालाजार है हमें कालाजार नहीं होता है कालाजार इज अ टाइप ऑफ जिसमें स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं उसको that is caused by another protozoa जिसमें नर्वस प्रॉब्लम्स होती है हो गया number 16 symptoms are the sign of disease definition क्या लिखोगे symptoms are the sign of disease sign of a disease signs of a disease are known as symptoms signs of a disease are known as symptoms which 16 Can you please show the 16 question marks? disease symptoms
Now, looking into this number 18. Give the cause and symptoms of Japanese encephalitis. Japanese encephalitis Bacteria disease. caused by a bacteria, but this bacteria starts developing in the nerve cells, affecting the nerves of the brain. So, what are some of the common symptoms? At least Headache. headache, the common symptom. Japanese encephalitis, if we have to talk about what are some of the symptoms, the person may suffer from improper coordination, क्योंकि brain effect हो रहा है. Improper coordination. Coordination. Huh? Cause. Cause is a bacteria. A bacteria causes this, and this bacteria may start developing in the nerve cells, resulting in convulsions. Convulsions मतलब fits आना, fits आता है. हाँ, shivering, shaking, fits आता है. Convulsions है, and then improper coordination है. लिखो, ये लिख के रखो. 18. Number 18. Number 18. Give the cause and symptom. लिखो. Japanese encephalitis. It is also known as brain fever. Japanese encephalitis is caused by a bacteria. Causes bacteria. Caused by a bacteria. मुझे जापान में ही होता है क्या? तो फिर जापान में ओरिजिनेट हुआ. हाँ. जैसे कोविड कैसे चाइना में हो. Japanese, yeah. तो चाइना Japanese scientists have isolated them. That's why. अच्छा मतलब इन लोग भी ना. So Japanese encephalitis, लिखो, caused by a bacteria. Second sentence. Next sentence. जैसे Symptoms लिखना है. दो symptoms लिखेंगे. Number 1. Severe headache. Severe headache. Number 2. it affects the nerves. Huh? Attacks the nerves of the brain. Attacks the nerves of the brain. So severe headache है. Number 1 I asked you to write. And number 2 लिखेंगे. Improper coordination. Improper coordination and convulsions. Improper difficulty in vision वगैरह ये सब भी होता है. But only 1 or 2 to write. Improper coordination, convulsions. Next is number 24. Organ specific symptom. We studied common symptom and specific symptoms. Yes, ma'am. Organ specific symptom of lung cancer. What should we write? Lung. Symptom of lung cancer. लंग कैंसर. Breathing, breathlessness and inflammation of the lungs. लिखो. लिखो. Specific symptom. I'm talking about now number 24. Specific symptom of lung cancer. Number 1. Specific symptom. First लिखो. Inflammation. Inflammation मतलब swell हो जाना. Inflammation of the lungs. And mucus formation. M-U-C-U-S. Mucus formation. MUCUS. M-U-C-U-S. Mucus formation. Inflammation of the lungs and mucus formation. Number 2 लिखो. Mucus क्या होता है? Mucus is a slippery substance जो कफ जब हमें होती है जो nose से निकलता है. lungs में जो अच्छा. mucus that is more than the nose. कफ जो हो जाता है गले में lungs में. लिखो mucus formation. Number 2 लिखो. Breathlessness. Breathlessness. और क्या है? हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस का लिखो सिम्टम 1. Symptom 1. Liver cells produces large amount of bile.
bile juice. Liver cells produces large amount of bile juice. This Bile juice. Bile juice एक yellow secretion है जो liver produce करता है, जो digestion में help होता है. तो अच्छा नहीं लगेगा ज्यादा किया तो. नहीं. Liver प्रॉब्लम क्या होगा? The liver becomes so bloated, so ये वाले individual जिनको hepatitis होता है, उनका stomach region बहुत बड़ा हो जाता है gradually, because the liver starts expanding, and in later cases they may die of cirrhosis. So liver becomes क्या लिखा? Secretion of bile becomes more, and number 2 is liver shows massive inflammation. Liver shows massive inflammation. लिवर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती ही है. तो हमने क्या बोला, डाई कैसे हो जाते हो कोई तो चीज? सिरहोसिस. लिवर सिरहोसिस होता है where the liver cells start dying out. Liver cells cannot produce the bile juice, इतना ज्यादा बन जाता है. The liver cells stop their normal function. तो ये इन लोगों में क्या होता है? The body starts becoming reddish, body starts becoming swelled up, and in extreme cases, small regions of the liver not bursting out, no, but they start dying out. Groups of cells dying out. So this person is not able to take in fluids also. कुछ भी digestion नहीं होगा. So this is a condition that's a very acute condition where people die of cirrhosis. Now the last one, 25 करेंगे, and then 26 you may just homework for you. 25, what is DPT? This is last class नहीं है? Last class है, by class है ये. तो 26 homework ये तुम करोगे. करेंगे क्या हम? तो अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम करना चाहो करो. It is my duty to tell you. Rest is your job. 25. Why is DPT? What is DPT? DPT is a type of a vaccine. Okay. DPT. It is a type of a vaccine. लिखो. Why is DPT called a triple vaccine? लिखो. DPT is a vaccine. एंटीजन मतलब अच्छा. ट्रिपल वैक्सीन मतलब एक ही वैक्सीन जो 3 तरह के डिजीज को ट्रीट कर सके. एंटीजन मतलब वैक्सीन. Why is DPT called a triple antigen? Because DPT is a vaccine to prevent diseases such as DPT is a vaccine that prevents. Vaccine prevent करता है ना disease. What did I teach you just now? It prevents 3 type of diseases. Diseases such as diphtheria, pertussis, and tetanus. Diphtheria. टेटनस का इंजेक्शन लगता है ना? होता क्या है? वो तो अगर हो गया है, then you take काटने it. का लगता है ना अभी. It is स्टील से कटता है. Something rusted. डॉग Something काटने का rusted. नहीं लगता है. Diphtheria, pertussis, and tetanus. Now, this होता क्या ये चीज? diphtheria is a condition very acute affecting the lungs, blood cells. वही वैसे. Pertussis मतलब whooping cough जिसको बोलते हैं, where again this is a condition of the chest, lungs. Such a mess. We shall leave you. And last is तुम्हारा ये बेसुरा गाने का ही कभी था. नहीं गाना अच्छा गाना नहीं है. Tetanus. ठीक है, very good. Tetanus. Tetanus is another type of a disease जिसमें muscles में bacteria starts developing and bringing about the contraction. Lock हो जाता है parts of the jaw, feet, lock हो जाता है. Lock jaw जैसे क्या है. Now, if you want, that is called lock jaw. तुम्हारा मेरा हाथ कर दिया. If at all you get rusted, you get cut in your feet, in your leg because of some rusted metal, and if the bacteria has entered, your entire muscles will start getting affected.
and muscles may start showing irregular contraction. Your body will start Squeezing. rolling. ऐसे बोल रहे हो क्या? Your body may show irregular contraction. It sometimes the jaw gets locked. क्योंकि the process of contraction relaxation नहीं हो पा रहा. तो खुलेगा नहीं फिर कभी. How is the person? The doctors will hammer you that time. Stupid person. There are injections to relax the muscles. So at that time, नाक से US की pressure पे नाक से हिलाते हैं. US में pressure है. that is the traditional method, but the immediate remedy is give injections to relax the muscle and then the body passes. Okay, complete karo. Now, if you want, absolutely up to you. If you want 26, that is up to you. You do, it's your good, you don't do it. 26, 27 remains as homework. Now, I'm sorry. 26, 28, 26, 27, same thing. 26, 28 remains as homework. Answers are straight away there in the volume. You have to just read once and try noting down for yourself whether you know the points or not. मेरी बुक है यार ये. नीरज हम लोग दोनों की वॉल्यूम भी लेके गए. Class over, chal. मैम देखो. We will miss you, ma'am. Oh my God. That's safe with me. Yeah. मैम इतनी जल्दी what you do? इसके बाद मिस करेंगे क्या नहीं सब लोग. How come your book is with मेरी बुक भी तेरे घर पे है. चुप रहे. always we are in 9th standard exams when so that you reach to 10th standard. हम ये भी definitely rest है. ओए अरे सुनना. Bob the Thank you, ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. हाँ उसके ऑफिस से क्लास से बाहर निकाल. ओए ओए इसे रात में Bob the Builder जल्दी आओ. Bob the Builder. मैम को बोलना पड़ेगा. अबे वही तो फिजिक्स ही करेगा. उदय सर. बायो ही नहीं है. बायो करने वाला बोल रहा हूँ. ये क्या? वही. आईसीटी वाले थे. हाँ तो